हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने साइंटिफिक लॉ को डिस्कस किया था और हमने ये सीखा था कि किस तरह जो लॉ की जो डेफिनेशन है उसके साथ एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो जुड़ा हुआ है। और क्यों अगर हम आज कोई चीज़ डिस्कवर करते हैं, अगर साइंटिस्ट आज कोई चीज़ दरियाफ्त करते हैं, हम क्यों उस चीज़ को लॉ नहीं कहते, हम क्यों इसको थ्योरी कहते हैं, हमने इस बारे में लास्ट टाइम डिस्कशन की थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी सो आई विल सजेस्ट कि आप पहले वो देख लें। सो लास्ट टाइम वी लेफ्ट ऑफ एट दिस टर्म हियर थ्योरी। सो इस वीडियो को हम इसी टर्म से स्टार्ट करेंगे। So I will just erase this here. So what are we discussing today? Theory. So that's number 3. So what is a scientific theory? कॉमन स्पीच में, कॉमन स्पीच यानी कि आम फहम ज़ुबान में या आम अल्फाज में, ठीक है, आम अल्फाज में जो लोग उर्दू नहीं जानते, ठीक है, आई विल just apologize to them, but you don't have to focus on this term if you don't speak Urdu, okay? So in common speech, जो टर्म है थ्योरी, उसका जो मतलब होता है that is a guess, okay? तुक्का, let's just use this term तुक्का. So आम लैंग्वेज में, कॉमन स्पीच में, when someone says I have a theory, so in that sense they mean a guess, okay? But in science, when we call something a theory, a scientific theory, we are not guessing, okay? So when we call something a theory in science, we are not guessing. So in science, not guessing. A scientific theory is the most tested, okay, most tested, most refined, and the most trusted level of understanding possible for any idea, for some aspect of the universe. Let me say that again. In common speech, when we say theory, when we use the word theory, we mean a guess. But in science, when we say there is a theory or we have a theory, we don't mean that we are guessing. We are not guessing. In science, a theory, a scientific theory, is the highest, most tested, most refined, most uh, trusted level of understanding possible for some aspect of the universe. A scientific theory is a framework which combines, so theory combines, okay? What does it combine? A scientific theory combines several principles and laws, and it makes a lot of predictions which are subsequently verified.
एक साइंटिफिक थ्योरी जो होती है वो एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जो कि मल्टीपल प्रिंसिपल्स को लॉस को कंबाइन करता है। और एक साइंटिफिक थ्योरी जो होती है वो ऐसी प्रिडिक्शंस करती है जिनको आप वेरीफाई करते हैं। So that's the first thing. The second biggest misconception is a theory does not become a law when it's verified. बहुत से लोग बिलीव करते हैं, समझते हैं कि थ्योरी लॉ बन जाती है जब उसको वेरीफाई किया जा चुका होता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। As I explained, a scientific law is something totally different. So when people say, oh, it's just a theory, they are confusing the common definition with the scientific definition. And calling it a theory is not an insult. अगर आप किसी साइंटिफिक आइडिया को कहते हैं कि ये तो बस थ्योरी है, ये कोई इंसल्ट नहीं है। It is actually the highest honor any idea can achieve in science. So the highest honor in science. जब कोई आइडिया साइंस में थ्योरी के लेवल तक पहुंच जाता है, दैट इज द हाईएस्ट ऑनर. It is not an insult. So a scientific theory does not become a law. Okay, a law is just the name, the description we give to some pattern that repeats. And I discussed it in the last video. You can watch it if you haven't. So this never happens. Okay, so this never happens in science. और ये सब कुछ यहाँ पे क्लैरिफाई करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि इस चैनल पे इस वीडियो सीरीज़ में इवेंचुअली हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, थ्योरी है जो कॉस्मोलॉजी की, विच यू कैन ऑलरेडी गेस, दैट इज़ द बिग बैंग थ्योरी. बिग बैंग थ्योरी जो कि मॉडर्न कॉस्मोलॉजी की फाउंडेशन है. और अगर आपको बिग बैंग थ्योरी की समझ नहीं है, इफ़ यू डोंट अंडरस्टैंड द बिग बैंग थ्योरी, यू कैन नॉट क्लेम टू अंडरस्टैंड कॉस्मोलॉजी. अगर आपको इस थ्योरी की समझ नहीं है, आप ये दावा नहीं कर सकते कि आपको कॉस्मोलॉजी की समझ है. सो जब मैं साइंटिफिक लॉ को डिस्कस कर रहा था, मैंने न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन की एग्जांपल दी थी. और मैंने कहा था कि वो जो लॉज हैं वो अपनी एप्लीकेशन में लिमिटेड हैं. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन एल्बर्ट आइंस्टाइन वो शख्स था, वो साइंटिस्ट था जिसने हमें एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग दी कि जब चीज़ें, जब ऑब्जेक्ट्स एक भागते हुए घोड़े से कई ज़्यादा गुना ज़्यादा जो है स्पीड से जब चीज़ें मूव करती हैं तो फिर वो किस तरह बिहेव करती हैं. ठीक है. सो एल्बर्ट आइंस्टाइन was the one who would give us a better understanding of how things behave when they are moving much faster than a running horse. And it's called the special theory of relativity. So इस वीडियो को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ. If you think this is interesting, please consider subscribing. In the next video, we will discuss the final term in scientific vocabulary, that is a scientific model. Thank you very much for watching this video, and I will see you in the next one.